The trading results of GEMS Bond and Company for the last 2 quarters are given. ठीक है, 2 quarters का हमें सेल्स भी दिया है एंड कॉस्ट भी दिया है. ठीक है, एक क्वार्टर है till the March and the second quarter is up to the June. Now they are asking us to calculate the following things. The very first thing is a profit volume ratio. Now देखो, जब भी इंफॉर्मेशन जैसे 2 quarters का दिया हो तो वी नो दैट जब भी दो चीज हमारे पास हो तो वी कैन फाइंड इट आउट द पीवी रेशियो बाय द फॉर्मूला चेंज इन द प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन द सेल्स इनटू 100. अब देखो, ये फॉर्मूला के लिए वी रिक्वायर अ प्रॉफिट, but here the information which is given to us is only of a sales and a cost. So can we find out the profit? Yes, we can find out the profit. We all know कि सेल्स माइनस कॉस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है. तो फाइन, तो सेल्स माइनस कॉस्ट करते हैं, वी विल बी गेटिंग द प्रॉफिट ओवर हियर फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड द for the month of June. So for the March month, let's find out the profit. Sales, that is 50,000 minus cost, that is 40,000. So how much profit you will be getting? You will be getting 10,000 as a. Same way we can find it out for the June month as well. So June is equals to कितना है सेल उसमें 75,000 minus what is the cost 55. So this will be equals to how much 20,000 rupees. We got a profit for the month of March and for the month of June. मतलब पूरे quarter, not the month, but हमें पूरे quarter का मिला इतना. Now let's find out. Let's substitute this into the formula and write it down. Change in the profit. अब देखो, ये दोनों के बीच का difference. Change, what is change? Change is nothing but ये दोनों के बीच का difference. So इन दोनों के बीच में का difference कितना है? 10,000 rupees. So write down the 10,000 in the numerator. Divide by change in the sales. अब देखो, change in the sales. Sales में change करो. 50 minus 75 will give you 25,000 into 100. So we will be getting the 40% as a PV ratio. Fine. Now next thing they are asking us to find out the fixed cost. अब directly we cannot find out the fixed cost over here क्योंकि हमारे पास सिर्फ profit volume ratio ही अभी तक. तो हाँ, profit volume ratio है तो through this we can find it out the contribution and through contribution we can find it out the fixed cost. तो हम क्या करते हैं, पहले PV ratio का जो formula है contribution divide by sales, because why we are taking this formula, we have find it out the PV ratio and हमारे पास सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. So through this formula we can easily find out the contribution. Just alter the formula. Contribution is equal to PV ratio into sales. Now we need to calculate for both of the quarter March and for the June. ठीक है, अभी देखो सेल्स कितना है, 50,000 is for the quarter of first quarter, that is till the March. So 40% of 50,000 will give you the contribution of 20,000. Same way calculated for the June. 40% of sale, that is 75,000. So this will be 30,000. So we got a contribution for the month of, for the first quarter as well as for the second quarter. Now we know that, see, we have a performer. Sales minus variable cost gives us the contribution. From the contribution, if we subtract the fixed cost, we will be getting down the profit. So see, I have written down over here. Contribution minus fixed cost will give me the profit. So I can just alter the formula for finding out the this fixed cost. Yes, I can. So अगर मैं contribution में से profit को subtract कर देती हूँ, is equals to fixed cost. So I can find it out the fixed cost like this. Contribution minus profit will give me the fixed cost. Now we have calculated the contribution in step number 2, and we have also done the calculated the profit before only. So we can just write it down for the month of, for the first quarter, that is till the March, and for the second quarter. So what is the contribution for the month quarter of first quarter? That is 20,000. Minus what was the profit? 10,000 was the profit. So 20 minus 10 will give you the 10,000 rupees. And the fixed cost remains the same. We all know that fixed cost remains the same. But still, for your understanding, we will be finding out for the second quarter as well. Dekho, 30,000 was the contribution for the second quarter and 20,000 was the profit. So 30,000 minus 20,000 will give you 10,000 rupees. So fixed cost is of a 10,000. Now the next thing,
break even sales volume. They are asking us to find out the BEP. We know the formula for the BEP, fixed cost divided by PV ratio. Now see, fixed cost kitna hai, 10,000 rupees, correct? PV ratio we have already find it out in the step number 1, that is 40%. So 10,000 divided by 40% will give you 25,000 rupees, and this we have find it out in the amounts. ये जो BEP है हमने किस में find out किया है? We have find it out in the amounts. So just write down over here. Done. So see, हमारे पास फिक्स कॉस्ट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया फ्रॉम द स्टेप नंबर 2. वी गॉट अ पीवी रेशियो इन द स्टेप नंबर 1. तो इजीली सिर्फ हमें बीईपी से फॉर्मूला अप्लाई करके बीईपी का अमाउंट फाइंड आउट करना था. What is the next part which they are asking us to find? Sales to earn a profit of 15,000 rupees. मुझे 15,000 rupees का प्रॉफिट अर्न करना है, तो बोल रहे हैं कि आप हमें ये बताओ कि हमें कितना सेल करना चाहिए टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 rupees. So we can use the formula of a required sales. We all know the formula. What is the formula? Fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. Now, what is a fixed cost? We got a fixed cost from here, that is 10,000 rupees. प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट चाहिए हमें? 15,000 का प्रॉफिट चाहिए. सो 10,000 प्लस 15,000 विच कम्स टू 25,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, दैट इज डिवाइड बाय 40%. yes, so we will be getting rupees 62,500. now the same way, in the same pattern, what they are asking, अब देखो डी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, ई पार्ट सॉरी, प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर 40,000. अब बोल रहे कि हमें सेल्स दे दिया है कि आप हमें 40,000 का सेल हमने किया, अब बोल रहे कि 40,000 पर आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे ये बताओ. सो दैट वी विल टेक द सेम फॉर्मूला लेंगे एंड वी विल सब्सटीट्यूट द फिगर्स ओवर हियर. अब देखो सेल्स दे दिया है क्वेश्चन में, कितना? 40,000 का सेल्स. Fixed cost we already have find it out, that is fixed cost is 10,000 from here. What is the desired profit? Desired profit to find karna hai, so just write down plus desired profit divide by PV ratio, that is divided by 40%. Now this is a max. 40,000 into 40% is equals to 10,000 plus desired profit. So this 40,000 का 40% comes to 16,000. ये 10,000 को is equal to के ये साइड लेके आओ. So ये हो जाएगा minus 10,000, which will give me the desired profit. So 16,000 minus 10,000 will give me 6,000. So desired profit will be now 6,000 rupees. तो अगर जब मैं सेल 40,000 का कर रही हूँ, मुझे उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिल रहा है? आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 6,000. Now the last part. Lastly, they are asking us to find out the revised break-even point if the fixed cost that is increased by 30%. कि आपका अभी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो आप हमें न्यू बीईपी फाइंड आउट करके दो. तो पहले ये देखते हैं कि ओल्ड वाला कितना था हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, 10,000 रुपीज. अब नया कितने से इंक्रीज हो रहा है? 30% से इंक्रीज हो रहा है. सो 10,000 का 30% कम्स टू हाउ मच? 3,000, करेक्ट? तो 10,000 प्लस 3,000 ऐड कर लो, तो रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी द रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट? करेक्ट, 13,000 का रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ देखो द चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन द फिक्स्ड कॉस्ट. क्या कंट्रीब्यूशन पर कुछ इफेक्ट होगा? क्या पीवी रेशियो पर कुछ इफेक्ट होगा? नो नो, इट वोंट अफेक्ट. द पीवी रेशियो विल रिमेन्स द सेम. क्यों सेम रहेगा? क्योंकि हमने ना तो सेल में कुछ चेंजेस आया है, ना ही कुछ हमारे कंट्रीब्यूशन में चेंजेस आया है. तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम. ओनली द चेंज इज दैट द PV ratio remains the same. The only change is in the fixed cost. So we can find it out. Now we know the formula for the PEP, fixed cost divided by PV ratio. So what is the fixed cost over here? Fixed cost, हमने revised fixed cost find out किया. That is 13,000 divided by PV ratio. As the PV ratio will not get changed because the sales and the contribution is same. They are not getting changed. So 13,000 divided by 40%. Calculate, yes, 32,500. So we got a new BEP, that is a revised BEP of 32,500. So let's write down over here revised BEP. Yeah,
yes